Hello students, welcome to online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for class 8, subject history, chapter sources of history. Let us now begin. Sources of modern history are material sources, written sources, oral sources and audiovisual sources. So these are the four main important sources of modern history. Let us now start with our first source, that is material sources. Material sources include various objects, monuments, places, coins and sculptures. Let us start with buildings and palaces. The period of British rule and period of governance of princely states is known as the period of modern Indian history. यानी जब ब्रिटिश रूल का रूल चल रहा था उस टाइम को हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। इस समय में बहुत सारे अलग अलग ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स और वाटर सप्लाई सिस्टम बनाए गए थे। सम ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट्स व्हाइल सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। इनमें से कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है और कुछ को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। म्यूजियम वो जगह होती है जहाँ पे एंटीक्स और हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें रखी जाती है प्रिजर्व करके, जिसमें पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड बाकी और भी चीज़ें आ सकती हैं। We get to know about contemporary history, architecture, nature of monument and also the economic condition of that particular period by visiting these sites. तो जब हम इस जगह पे जाते हैं, जब म्यूजियम, बिल्डिंग ऐसे हम जगह पे जाते हैं तो हमें वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को हिस्ट्री का एक सोर्स। The next source is statues and memorials. Memorials in the form of statues are erected of soldiers, leaders and many personalities who took part in the freedom struggle. The statues also provide information about the great rulers and important personalities of that time. Memorials erected in the memory of various events give information about the concerned event, period, people related to the event and etc. All this information we can get from the statues and memorials. Other than that, there are some written inscriptions along with the statues or sculptures from which we can get the information. For example, the Hutatma chalk. The next source is written source. Written sources include correspondence, foreign accounts, newspaper, biographies, periodicals, factory records, autobiographies and books. Now, what are newspapers and periodicals and what are the uses of it? From newspaper, we get information about detailed information of any particular event we can get from the newspaper, view of important people, what are their opinions on the subject that we can get from the newspaper. Other than that, political, cultural, social and economic happenings, what are the great events in economic and cultural which are happening in the world, we get to know about the newspapers. All these things are available in the newspapers. Some newspapers of the pre-independence period are Jnanoday, Gyan Prakash, Prabhakar, Deenbandhu, Kesari, etc. Contribution of the newspaper is very high in the pre-independence period. Newspaper was used by many freedom fighters to create reforms among the people. The next one is maps and drawings. The British government surveyed various provinces and cities of India through scientific method and created maps. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह से घूम के बहुत सारी जगहों का मैप बनाया है। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर्म फॉर द पर्पज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। इस डिपार्टमेंट का काम ही है मैप्स और ड्राइंग्स बनाना। मैप्स और ड्राइंग्स में आइडिया गिरता है उस सिटी और या प्लेस के बाउंड्री के बारे में और उसके आसपास की जगहों के बारे में। द सेकेंड लास्ट सोर्स इज ओरल सोर्सेज। The oral sources are compositions that are passed on from one generation to other with the way of information or remote learning and thus preserved. Oral sources वो composition या poems होती है जो orally हम एक generation से दूसरे generation तक पहुँचाते हैं और उसको संभाल के रखते हैं। कुछ oral sources को बाद में लिखा भी जाता है। Oral sources includes inspirational songs, folk songs, poada, rhythmic prose, fair, jalsa, art groups, interviews, narrations and folk tales. Inspirational songs. Though many inspirational songs were composed during the freedom movement, only some are available at present. A lot of songs were memorized and never got published.
We get information about the conditions during pre-independence period through this song. जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है वो उस टाइम को या इवेंट को व्यक्त करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस प्री-इंडिपेंडेंस टाइम में लोग कैसे रह रहे थे और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. They give inspiration to the society and infuse spirit in the freedom movement. इंस्पिरेशन सॉन्ग्स का मेन मोटिव ये होता है कि सामने वाले को इंस्पायर करे, काम करने के लिए मोटिवेट करे. नेक्स्ट आर फोक सॉन्ग्स. Folk songs are also like inspirational songs, but are given in the older times. वो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, हमें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किए जाते हैं. That are called folk songs. Folk tales are also old stories like folk songs. बस इतना फर्क होता है कि सॉन्ग के बदले उसकी भी कहानी होती है, जैसे कि महाभारत एक folk tale है. नेक्स्ट आर इंटरव्यूज. इंटरव्यू से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर का इंटरव्यू और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स या बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज जो NGO सोशल लीडर्स होते हैं जो अवेयरनेस फैलाते हैं. इंटरव्यू के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है उनके बारे में. द फाइनल सोर्स फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज ऑडियो विजुअल सोर्सेज. ऑडियो विजुअल सोर्सेज इंक्लूड्स फोटोग्राफ्स, recordings and films. Photographs. After the development in the art of photography, it became an important source of modern Indian history. Medieval period paintings are available which depicts physical features of a person or visual description of a particular event, but the authenticity of such paintings are to be verified. Photographs के आने के बाद से जो रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम था वो बहुत ही चेंज हो गया, क्योंकि पेंटिंग्स का एक्जैक्टली फोटोग्राफ जैसा होता था पर उसमें फ़र्क रहता था कि पेंटिंग्स जो है वो मैनमेड है, मतलब इंसान ने बनाया है, तो उसमें अपने मर्जी से कोई भी चेंजेस कर सकता है. तो हम उसको मतलब एक उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्या पता कि वो सही सोर्स है या नहीं हिस्ट्री का, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है. बट फोटोग्राफ में ऐसा नहीं है, फोटोग्राफ्स आर एग्जैक्ट, तो हम लोग उस पर रिलाई कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो चीज़ें हैं वो सेम वैसी ही हुई रहेगी. Next is recordings. In the modern period, speeches of leaders or important personalities, songs, music are available in the form of recordings. Recordings of Jana Gana Mana sung by Rabindranath Tagore himself, speeches of Subhash Chandra Bose and lectures of leaders and thinkers are available. They can be used as a source of history. Recordings को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि लीडर्स की कोई स्पीच हो गया उनमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है. तो ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन और आइडियोलॉजी हमें जानने को मिलती है रिकॉर्डिंग्स के द्वारा. नेक्स्ट इज फिल्म्स. फिल्म्स, मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर ऑडियो विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. दादा साहेब फाल्के laid the foundation of Indian film industry in 1930. Audio visual recordings of Dandi Yatra, Salt Satyagraha, Quit India movement are available. The advantage of this technological development is that the events could be seen in reality. फिल्म्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये स्टिल नहीं होता है फोटोग्राफ की तरह, यहाँ पे हमें हर चीज़ मिलती हुई दिखती है, यानी हमें असल में ऐसा है कि हमें उस मोमेंट को वापस ही जी रहे हैं, वी आर रियल इन दैट मोमेंट. सब कुछ हम लोग को रियल दिखता है, जैसा वहाँ पे था उस टाइम का जैसा कंडीशन था सेम हम लोग वैसे ही देख सकते हैं. We come to know about prevalent conditions, problems and dressing style through audio-visual sources. Now that we have studied about all the sources of modern history, let us see why it is important to preserve these sources. It is important because without these sources we cannot say about the history. हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए सोर्सेज हमारी हेल्प करते हैं. तो अगर हम इनको संभाल के नहीं रखेंगे तो हमें इवेंट के बारे में, पास्ट की लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा. तो प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देयर आर प्लेसेस वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व लाइक म्यूजियम्स, आर्काइव्स. दिस सोर्स गिव एविडेंस ऑफ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. While referring the written sources, the ideology and opinion of author regarding the particular event should be examined. मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि हिस्ट्री लिखने के समय जो सोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं उसका ऑथेंटिसिटी हमें देख लेना चाहिए कि वो सोर्स सही है या नहीं.